Hi friends, welcome back to Everstudy Classes. I hope all of you are really good. If you are able to hear me, if you are able to see me clearly, just give me a thumbs up in the chat box. Very good evening, Lokesh, Ankita, Sanju, Tanmay, Carolina, Kiran, Fayaz. Very good evening, Mohini. फटाफट से thumbs up दे दो chat box में so that we can quickly start with today's session. So today we are going to discuss the MCQs on banking and finance topic. They are going to be relevant for Karnataka assistant professor as well as UGC Net Commerce examination. Okay, that's really good to hear, Carolina. Okay, so with this, let's quickly move to our discussion. And before proceeding, let me quickly tell you about the courses that we have for UGC Net. So we have courses for UGC Net Commerce and Management. So you can check out the PYQs, test series, and even the complete course. And you can also check out the courses for Karnataka Assistant Professor Commerce Examination. And we are running 50% off on these courses. Guys, we are having this weekend sale, and this weekend sale is going to end today. So if you want to purchase courses at a discount, you can buy the courses. Okay, so let's quickly come to the first question. So the first question that we have is, which is not correct about the functions of Indian financial system? I don't know why it is getting cut on the side. Okay, now it should be okay. या मोहिनी, अभी क्रैश कोर्स नहीं है, अभी वी डू नॉट हैव क्रैश कोर्स बिकॉज अभी टाइम ज्यादा है, आप पूरा कोर्स ही पढ़िए. तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इट डेफिनेटली ब्रिजेस द गैप बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. दिस इज ट्रू. जिन लोगों के पास पैसे हैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. It facilitates financial transactions through provision of various financial instruments. There are different financial instruments जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं. आपके जो बिजनेस है, जो उनका पैसा ब्लॉक्ड है, उसको रिलीज कर सकते हैं. शेयर्स इशू करके they can even raise more money. Option number D is incorrect because answer is option number D. It is incorrect because it deals with fund based and non fund based services. अगर आप बैंक विजिट कर रहे हो, if you are visiting any bank, not only it is providing you fund based facilities, not only it is giving you loans, but it is also giving you other facilities. It is advising you on different issues. So all these advisory services and non fund based services are also available. Okay, bank is also providing you locker facilities. So lots of services are available which are not directly related with money. So that's why the correct answer is going to be option number D. Correct answer is going to be option number D. गुड इवनिंग निहारिका. जल्दी से फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट कीजिए निहारिका. So now we have the next question. Arrange the following events in the Indian banking scenario in correct chronological order. Chronological order को समझते हैं आप? यानी कि the event which happened first उसे आपको पहले लगाना है. The first event is going to come first. Good evening Sane Academy. फटाफट से आंसर्स दीजिए. So we have three events here: Regional Rural Bank Ordinance, first nationalization of banks, State Bank of India's merger with its 5 associate banks. I'm seeing answers coming in as option number C from Ankita, तरुण, मौसमी, निहारिका. सभी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं. तो देखते हैं पहले आपकी क्या इवेंट आने वाली है. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इट हैपेंड इन 1969. तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इट हैपेंड इन 1969. ओके, देन आरआरबी ऑर्डिनेंस. आरआरबी एक्ट आपका कब आया? आरआरबी एक्ट केम इन 1970. ओके, 1975 के अंदर ऑर्डिनेंस आई एंड 1976 के अंदर आपका एक्ट आया. स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज मर्जर विद 5 एसोसिएट बैंक्स. तो दिस इज अ रीसेंट इवेंट. ये आपका जो इवेंट इट हैपेंड रिसेंटली इन 2017.
तो पहले आपका 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा और फिर आपका 3 होगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. Answer is not C. Most of you guys were saying कि sir answer is option number C, but it is not. It is not. 1959 State Bank of India's merger with 5 associate banks. अरे बाप रे, आप गलत बोल रहे हो. आई थिंक आप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाला बताने लग गए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक्स हैं, दीज आर दी एसोसिएट बैंक्स. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बीकानेर, जयपुर. ये जो मर्जर हुआ हमारा, ये 2017 में हुआ. So there was some confusion and I hope it is resolved now. Chaliye. So let's come to the next question. We are given some developments related to the Indian financial system, like we are given privatization of the financial institutions, reorganization of the institutional structure, investor protection, and you have to identify कि these developments they are associated with which phase of the Indian financial system. So Indian financial system it broadly has 3 phases: pre 1951 independence से पहले, 1951 to mid 80s and post 1990s. तो आपको बताना है कि these events they are related to which of the following phases. Okay. Fires SBI came into existence तो मुझे पता है, but I was asking about merger of SBI with its associate banks, जो कि अभी recently हुआ था. I'm getting the answer is option number C from Carolina, Chaitra, Lokesh. सभी कह रहे हैं आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी. एंड यस गाइस, द आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. तो अप टू 1951 ये तो आपका इंडिपेंडेंस वाला सिनेरियो आ गया. इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे बैंक्स की पोजीशन थी, 1951 से 80s की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा हमारा जो पब्लिक सेक्टर था उसकी तरफ ज्यादा इंफोसिस था. नेशनलाइजेशन हमारे किए गए बैंक्स का. और अगर मैं बात करूं 1990 से, सो वी ऑल नो कि 1990s वी मूव टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. एंड सिमिलर ट्रेंड वाज सीन इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एज वेल. तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी वी गॉट टू सी की लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कमिंग इन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस था. आपका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था, बैंकिंग आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, जो आपके बैंक्स हैं, वो अलग अलग तरीके से बाइफरकेट किए गए, नए बैंक्स हमें देखने को मिले. So they are related to post 1990s. So yeah, the answer is option number C. You guys are right for this one. Answer is option number C. चलिए, अब आया वो सवाल जो एसबीआई कह रहे थे ना 1955 में बना. तो अब देखिए ये जो सवाल है ना वो उससे कुछ जुड़ा हुआ है. Which is are true about Imperial Bank of India? Imperial Bank of India, बताइए. हाँ बिल्कुल तेजस्विनी, एलपीजी 1991. एलपीजी related to 1991. Which is are true about Imperial Bank of India, IBI? जी बिल्कुल एलिन, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. आई एम सीइंग द आंसर्स कमिंग इन एज ऑप्शन डी फ्रॉम अशोक, सी फ्रॉम अंकिता, सहाना इज सेइंग बी. सो कंफ्यूजन लग रहा है कुछ थोड़ा सा यहाँ पे. चलिए लेट्स रिजॉल्व दिस कंफ्यूजन गाइस. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू. व्हाई ऑल आर ट्रू? बिकॉज आपके जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन से थे? आपके बंगाल, बॉम्बे और मेड्रास वाले. ये आपके प्रेसिडेंसी बैंक्स थे और इनको हमने अमलगमेट करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया 1921 में. ये बनाया जो गया था, इट वाज मेड ऑन द एडवाइस ऑफ केन्स, जेएम केन्स की एडवाइस पे हमने इंपीरियल बैंक बनाया था. इन 1955 के अंदर क्या हुआ? 1955 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की ओनरशिप ले ली and it was renamed as the State Bank of India. It was renamed as SBI. So that's why all of these they are correct. So answer is going to be option number D. आंसर ऑप्शन डी होगा. तो जो भी ऑप्शन ए कह रहे थे प्लीज चेक इट कि आपका जो ऑप्शन 3 है दैट इज आल्सो करेक्ट, जो पॉइंट 3 है दैट इज आल्सो करेक्ट. ओके, विद दिस लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पेमेंट बैंक स्कैन. हाँ बिल्कुल, शालिनी को सभी याद है प्रेसिडेंसी बैंक्स. चलिए बहुत बढ़िया शालिनी, बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट बैंक्स के ऊपर. पेमेंट बैंक्स कैन, what payment banks can and what payment banks cannot, so you should know this.
दो तरीके के बैंक्स आए हमारे पास, डिफरेंशिएटेड बैंक्स इन्हें बोला जाता है. टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स, वन इज स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड द अदर वन इज द पेमेंट बैंक. दे हैव सम डिफरेंसेस. Okay, I'm seeing the answer coming in as D from Ashok, Shubha, Ankita, but Chaitra, Deepa are saying A, Kusum is also saying A. So A और D के अंदर confusion चालू है. जो आपके पेमेंट बैंक है, देखो जो पेमेंट बैंक है वो क्या नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक दे कैन नॉट गिव लोन. द पेमेंट बैंक दे कैन नॉट एक्सेप्ट फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स. दे कैन ओनली प्रोवाइड स्मॉल सेविंग अकाउंट एंड मेनली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड रेमिटेंस फैसिलिटीज. ओके, तो पेमेंट बैंक्स इसीलिए बनाए गए हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो आपके हैं वो ये सब फैसिलिटीज कर सकते हैं, वो ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं, बट पेमेंट बैंक्स दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, दे कैन नॉट गिव अ लोन. So that's why answer is only going to be option number A. They can provide small saving account. They can provide small saving account. Okay. They cannot give any form of loan. So if you are issuing a credit card, it is a form of loan which is not permitted. Which is not permitted. Okay. Yeah, बिल्कुल up to 2 लाख कर सकते हैं. बिल्कुल चैतरा, this is right. बिल्कुल सही बता रहे हो आप. चलो जी, फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following is not a quantitative measure of credit control? और ये क्या हो गया? अरे इसको छुपा लो, चीटिंग कोई नहीं करेगा. Which of the following is not a quantitative measure of credit control? किरण प्लीज चेक, अगर मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा अलाउ किया होगा. किरण प्लीज चेक ऑन योर पार्ट. आई विल ऑल्सो क्रॉस चेक अगर आप कह रहे हैं. आप तो पता लग ही गया ना. इसका आंसर कोई गलत कैसे दे सकता है? जो गलत देगा द पर्सन इज सुपर ऑनेस्ट पर्सन. चलिए, ऑल आर सेइंग सर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Quantitative and qualitative measures of credit control. So quantitative के अंदर we are going to have different ratios, CRR, SLR, bank rate, repo rate, reverse repo rate, marginal standing facility. They are quantitative measures. RBI is going to control the quantity of credit which has to be there in the economy. Okay, so RBI आपकी CRR, SLR को बढ़ा सकता है. So ultimately the money and the credit it is going to reduce, and similarly with the other rates RBI can temper and can affect the quantity of the credit in the market. Okay, so these are quantitative tools. Why they are quantitative tools? Because RBI is making certain quantitative changes. It is increasing the ratio, let's suppose from 5% to 6%. So this is a quantitative change which RBI is making, and that is why this is a quantitative measure. Okay, in qualitative measures RBI is affecting the amount of credit in the market, but RBI is not changing directly any quantity. कोई क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं. तो आरबीआई जहां पे क्या कर सकता है, कमर्शियल बैंक्स को परस्यूट कर सकता है, डायरेक्टली उनको यहाँ पे डायरेक्शंस दे सकता है कि आपको ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है, उनको कह सकता है कि आप मार्जिन रिक्वायरमेंट और बढ़ा दीजिए. तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन. सो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट राशनिंग है, क्रेडिट राशनिंग जो है इट इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. So that's why guys the answer is going to be option number C. Answer is going to be option number C. Answer is option number C. Okay, with this let's come to the next question. Consider the following risks in the banking sector and identify the correct code. अब match the following question. एलन को तो सारे रेट्स भी ज्यादा हैं. चलिए बहुत बढ़िया, CRR, SLR, MSF सब बता दिए उन्होंने. हाँ, ये सारे रेट्स के मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो गाइस प्लीज डू रिवाइज देम कि सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है, रेपो रिवर्स रेपो में क्या डिफरेंस है. वी हैव डिस्कस्ड देम मेनी टाइम्स इन द क्लास एज वेल. चलिए, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क. अशोक इज सेइंग डी, शालिनी, चैत्रा, दीपा, others are saying sir option number B should be the right answer. And yes, option number B is definitely right. So credit risk means कि आपने लोन दिया, अब आपको पैसा वापस नहीं आएगा. फेलियर टू रीपे द मनी बैक बाय अ बोरोवर टू द क्रेडिटर्स. ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है कि जो बैंक के ऑपरेशंस हैं, जो बैंक का ऑपरेशंस चल रहे हैं, कोर ऑपरेशंस चल रहे हैं, कोर काम चल रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी डिसरप्टेड. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ सडन फेलियर ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम, the entire operations of the bank they are going to come to a standstill.
So that's why this is an operational risk and business risk. Every business has this risk. It may not be able to generate profit at the target level. So banks also have this risk. So that's why the correct matching is going to be option number B. Option number B is going to be the correct matching. Okay, with this, let's come to the next one. Which of the following is not one of the pillars of Basel II guidelines? We have Basel 1, Basel 2, and Basel 3. Basel 1, Basel 2, and Basel 3. I'm seeing the answers coming in as option number B from Shalini, Lokesh, Shambhavi, Carolina, Sahana. All are saying, sir, option B has to be the answer. So yes, guys, Basel 2 guidelines, we have three main pillars of Basel 2 guidelines, which are minimum capital requirements they are prescribed, supervisory review on banks is there, and a discipline is also sought to be levied on the banks. Maximum credit offtake ऐसा कुछ नहीं है, it is not one of the pillars. So answer is going to be option number B. Credit को तो we have to control, we have to make sure that we should have proper capital adequacy ratio. The amount of capital should be adequate with the banks, so we have to make sure the amount of credit cannot be so much that it is not aligned with the capital that the bank is having. So maximum credit offtake is not one of the pillar, and that's why the answer is option number B. Okay, with this, let's come to bilkul Chetan, India is following Basel 2. RBI, it deferred because of COVID Basel 3 norms the last I checked, but I'll check it again whether they are deferred again or not. Okay guys. अरे वाह, किरण तो बता दिया कि बेजल 1 88, बेजल 2 2004 and Basel 3 2010. It's really good to see all of these lovely responses coming in. It shows ki how serious you guys are with respect to this examination and how you are going to make us proud in the upcoming examination. I'm looking forward to amazing results from all of you guys in this Karnataka Assistant Professor examination. We have got amazing response from you guys and we want amazing results as well. So the question is 90 days overdue norm. अरे बाप रे, all of you have answered in unison. सभी का आंसर आया सर ऑप्शन नंबर बी है. ये तो पक्का से ऑप्शन नंबर बी है. बिल्कुल जी, ये पक्का से ऑप्शन नंबर बी है. एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो अगर बैंक ने कोई लोन दिया, द बैंक हैज गिवन एनी लोन एंड इट हैज नॉट रिसीव्ड इंटरेस्ट और द इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर मोर देन 90 days, then we are going to call it as an NPA, non performing asset, NPA. So this is definitely right. Good work guys, good work. Okay, now let's talk about primary markets. Primary market assertion reasoning question. We all know there is one primary market, there is another secondary market. So whenever a company is coming up with an IPO, it is basically a primary market thing. And whenever the already issued securities, they are being traded by the public, it is called secondary market. Okay, so stock exchange is your secondary market. The people are trading already issued securities. So this is the difference between the two. Primary market is of great significance to the country, to the economy. Okay, Lokesh, Carolina, Parvati, Shalini, Mohini, all are saying, sir, answer has to be option number A कि दोनों correct हैं और reasoning भी correct है. So let's see if this is correct. And yes, guys, this is definitely correct, absolutely correct. Primary market is of great significance to the economy of a country. Why it is of great significance? Because it is through the primary market that funds flow for productive purposes from the investors to the entrepreneurs. So जब भी IPO आता है, so you guys are always waiting. Those who invest in the stock markets, they are always waiting कि अगला IPO कब आने वाला है, कौन सी कंपनी का आने वाला है. और आपने जो पैसा सेव किया है, you are going to invest that money in the companies. So that money which was lying idle in your bank account is going to go to that company, and that company is going to productively deploy it for different purposes, is going to make some more returns on that money. So yes, assertion, reasoning, both are correct. Reasoning also supports assertion because the primary market, the money is going to flow for productive purposes and is going to be beneficial for the economy. So answer is definitely option number A. Right, it is also called new issue market. Bilkul. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज आर ट्रू अबाउट अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर. एडीआर के बारे में कौन सी बातें ट्रू हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स.
Let's see some good answers. Okay, Sagar, Parvati, Carolina, Shambhavi, they are saying, sir, answer is option number D. Ellen, this is a fact. This is a fact that you can check on your part. What do you want me to tell about it? Okay, I'm seeing all of the answers coming in as option number D कि sir सारे correct हैं. These all are correct. तो बिल्कुल जी ये आपके सारे correct हैं. American depository receipts. What are American depository receipts? जब इंडिया की कंपनी को कोई भी नॉन यूएस कंपनी को अगर अमेरिका के अंदर शेयर्स इशू करने, if an Indian company wishes to issue shares in USA, wishes to make sure that its stock is listed in the United States, its stock is listed in the New York Stock Exchange, then it can go for these ADRs. So it is basically a security which represents the security of a corporate company trading in the stock exchange of USA. For example, Infosys is an Indian company, and if it wants to list its share in the US stock exchange in NYSE, then the only way possible is ADR. It is going to issue ADR on New York Stock Exchange. So non-US companies, they can trade their shares on the stock exchanges and financial markets of the USA through these ADRs. They are denominated in dollars. Okay, so ADR का जो denomination होगा, it is going to be in dollars, and they are going to pay dividend in US dollar. So that's why all of these, they are correct. All of the above are true. Okay, yes, answer is option number D. हाँ, explain कर तो दिया. If a non-US company wishes to enter the stock market of USA, then it has to use these ADRs. Okay, ADR use करना इतना easy नहीं होता. You have to enter into a contract with a domestic custodian, and there is an overseas depository as well. So this complicated process is involved, and ultimately the overseas investors, जो आपके USA के investors हैं, they can invest in the Indian company. Okay, so this is how this process works. You can refer this diagram, refer this chart to understand it better. Okay. With this, let's come to the next question, which is incorrect regarding treasury bills, T bills. T bills में कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, इनकरेक्ट है, यू हैव टू टेल. Right, Sagar, Infosys. I want good response from all of you guys. This is Sunday today, and I want all of you people participating in this session. Especially the Karnataka crowd. I want the Karnataka crowd to be participating today. You know, I get some calls ki sir, do live sessions, we want to discuss, we want to solve MCQs, but when I take live sessions, I do not see that much of a crowd. So that's a strange thing. So show me your participation. Show me you are interested in these questions. Okay, answers coming in as option number B from Lokesh, C from Shalini, Shambhavi, Sagar. Let's see if answer is B or C. Treasury bills. Treasury bills कौन issue करता है? They are issued by RBI. They are money market instruments. They are issued by RBI to finance short-term requirements of the Indian government. There are four types of treasury bills: 14 days, 91 days, 182 days, and 364 days treasury bill. And they are issued at a discount to the face value. They are issued at a discount to the face value. Suppose it is 100 rupee treasury bill, it is going to be, let's suppose, issued at 95. So this 5 rupees discount is ultimately the return for the investor. Okay, they are carrying the lowest risk. Why they carry the lowest risk? Because they are issued by the government. गवर्नमेंट का पैसा कभी डूबेगा नहीं. गवर्नमेंट को लोन दिया, that money is not going to, not that money is not going to fail. Okay, that loan is not going to fail. So answer is going to be option number C. Answer is going to be option number C. Yes, it is issued at a discount and repaid at par. Right, right. हाँ, अभी जो 14 डेज हैं अभी उनको इशू नहीं कर रहे, बट इफ यू विल सी आरबीआई वेबसाइट, इट स्टिल सेज की 14 डेज, 91, 182, 364. These are the four types of treasury bills. बट क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट ना. बी के अंदर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, बी सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आप बी को क्यों चूज कर रहे हो? चूज सी ना. सी इज डायरेक्टली रॉन्ग. बिल्कुल सीधा सीधा गलत है. बिल्कुल शालिनी. हाँ, Ellen is saying gilt-edged security. Yes, these are gilt-edged securities, which are riskless securities, carry zero risk. चलिए, international monetary system is separate. Let's not get into that. Let's get into the next question. IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India, also referred to as IRDA I. Regulator of the insurance sector. And can you guys tell me where that is headquartered?
हाँ आंसर्स तो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के. कैन यू गाइस आल्सो टेल मी वेयर इट इज हेडक्वार्टर्ड? लावण्या, तेजस्विनी, तन्मय, रजत, you are saying sir answer is option number D. Answer is option number D. All of you are saying answer is option number D. Answer is definitely option number D. तो बताइए जी इरडा के बारे में. इरडा के हेडक्वार्टर आपको बताने हैं. लेट्स सी इफ एनीवन कैन गेस इट राइट. यस, लोकेश हैज गेस्ड इट राइट. इट इज हैदराबाद. इट इज हैदराबाद. ओके, इट इज हैदराबाद. तो इरडा जो है आपको डायरेक्टली कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नहीं बेचने वाला. And it is not going to directly invest the premium of the insurance companies. It is not going to announce the bonus for the policy holders or insurance. So it is not related to any of these. So answer is definitely going to be option number D. None of the above. None of the above is the answer. Right. Hyderabad. Hyderabad. बिल्कुल सही बता रहे हो आप. Hyderabad is the answer. Okay, with this, let's come to the next question. Assertion reasoning. Market capitalization is one of the measure of shareholder value. Reason is free float market capitalization is lower than total market capitalization. So let's see if you can solve it. Bilkul, it's a regulatory body, Vanishri. Market capitalization. What is market capitalization? It means number of shares into market price per share. This is going to be your market cap. This is going to be your market cap. Okay. I'm seeing the answers coming is an option number A. Chetra and Mohini are saying answer is option number B, and they are perfectly right. These statements, they are true individually, but reasoning is not explaining the assertion. Assertion and reason, they are both independent statements. Free float market capitalization. What is free float market capitalization? So it means that all the shares, they are not going to be publicly available. Some of the shares, they are going to be held by the promoters. So if we reduce those number of shares which are held by the promoters, and we compute the market price, we compute the market cap for the shares which have been issued in the market, which are freely available in the market, we call it free float market capitalization. Okay. So let's suppose if 100 shares are there and market price of one share is 10, market capitalization is going to be 1000. And and if 20 shares are with promoters, so n is now the number of shares which are freely available, they are only going to be 80. So your free float market capitalization is going to be 800. So your free float market capitalization is lower than the total market capitalization. So answer is option number B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Bilkul Chaitra, excluding the promoter shares. You are right. With this, let's come to the next question. In this type of lease transaction, primary lease period is short and lessor would not be able to realize the full cost of the equipment during the lease period. This type of lease is referred to as. चलिए फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का. Lease. We have different types of leases. Operating, financial, leverage, direct is not generally a type of lease, but yeah, it can be there. Operating, financial, leveraged, sale and leaseback transaction is also there. Seeing the answers coming in as option number A from Shambhavi, Shalini, Chaitra, Soumya, Vanishri, Virappa. Yeah, all of you are saying answer is option number A, and this answer is definitely option number A. So operating lease versus financial lease. We often distinguish this operating lease with the financial lease. So if we are taking any asset on a lease, let's suppose there is an asset, let's suppose there is a computer, life of it is life of it is suppose 5 years, and I am taking this asset on lease for only 2 years. Okay, only 2 years. So this is basically going to be an operating lease. The person who is giving the laptop on lease to me is not going to realize the full cost of the laptop from me. So it is for a very short period, and this is only referred to as operating lease. But if I'm getting something, let's suppose I am getting a car on lease and life of the car is 10 years, I am getting it on lease for 10 years. So this means the entire period of the asset is covered by the period of lease. The lessor is going to realize the entire amount of the car from me. So this is referred to as financial lease. Okay, so these are the two types of lease that we have, and you should know that operating lease is generally your short term lease and financial lease is generally your long term lease. तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप एसेट कोई लीज पे दे देते हो,
So it means कि asset की हमारी जो full economic life है, you have given the asset on lease for the entire economic life of the asset. So that's why it is a financial lease. So answer हमारे पास इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए. हाँ बिल्कुल चैत्रा. चैत्रा is always giving some extra information which is really good to see. Okay, with this, let's come to the next question. ABC Limited is restricted from borrowing money to finance new projects because it has suffered a downgrade in its credit rating. Which type of capital rationing is depicted here? So, capital rationing is a very important concept which is associated with your capital budgeting. So, when we are talking about capital budgeting, we are also talking about capital rationing. Capital rationing हम सबके साथ होता है. We always do not have full money to get something that we want. यू गो टू बाय अ मोबाइल फोन एंड यू इंक्वायर कि भैया कौन सा कितने प्राइस का है, तो वो बताते हैं कि एक तो नॉर्मल मॉडल है, एक आपका प्रो है, एक प्रो मैक्स है. सो आपकी कैपिटल जो है इट इज लिमिटेड, द मनी दैट यू हैव इन योर पॉकेट इज लिमिटेड, सो यू हैव टू मेक डू with the money that you have in your pocket. So capital rationing is always there. You cannot buy all the things. The funds, they are limited. Yes, Shalini, funds are limited. I'm getting the answer is option number C from Shashi, Ellen, Boamma, Niharika, Shambhavi, Nayana, Mohini, all of you are saying option number C. Yes, the answer is option number C. So we have two types of capital rationing, hard and soft. So soft का मतलब है कि हमारे पास assets तो पैसों की कमी नहीं है, but we want to make sure कि we do not spend the entire money. तो जैसे आपकी जेब में पैसे तो हैं, you can buy the higher version, but still you are not buying the higher version. You want to spend your money wisely. Okay, so that is soft capital rationing. But let's suppose you have only got that much of money. आपके मम्मी ने, आपके पापा ने आपको उतने ही पैसे दिए, you have been given that much amount of money only. You cannot spend more than it. So that is going to be hard capital rationing. That is hard capital rationing. So there may be a case in which on a company there are some restrictions which have been imposed that it cannot borrow anymore to finance new projects, to do any new projects. So that is going to be a hard capital rationing which has been imposed on the company by the outsiders. So that's why the answer is going to be option number C. Answer is going to be option number C. Okay, with this, now let's come to the next question. Again, assertion reasoning is there. And I want all of you guys to answer this one correctly. इसमें confuse नहीं होना. सर जब भी assertion reasoning का क्वेश्चन आता है हम तो आंसर ए लगा देते हैं. आंसर जो भी हो हम तो ए लगा देते हैं. I hope you are not doing this kind of thing. Conflict between NPV and IRR. NPV is your net present value. IRR is your internal rate of return. So we have these two different techniques. Answers coming in as option number A from Shalini, Shashi, Chaitra, Carolina, Ijaz. All of you are saying, sir, answer is option number A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. And yes, guys, definitely the answer is going to be option number A. NPV के अंदर हम क्या assume करते हैं? NPV के अंदर जो आपका cost of capital है, the discount rate that you are using, we assume the cash flows they are invested at that rate. But in IRR, internal rate of return. So in internal rate of return, we are basically assuming that your cash flows are being reinvested at this rate only, at your internal rate only. So that's why your IRR is that rate at which NPV is equal to 0. NPV is equal to 0. Okay, तो IRR के अंदर जो भी कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट किया जा रहा है, इट इज एज्यूम्ड कि वो हमारे IRR पे ही किया जा रहा है. एंड एनपीवी के अंदर हमें एक स्पेशली डिस्काउंट रेट दिया रहता है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहता है, एंड एट दैट रेट कैश फ्लोज आर बीइंग री इन्वेस्टेड. ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है, इट इज बिकॉज ऑफ द री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन दैट वी हैव. IRR के अंदर अजम्पशन अलग है एंड एनपीवी के अंदर अलग है. So yes, the answer is option number A. A and R are true and R is the correct explanation. तो री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन में आपके डिफरेंट डिसीजंस भी कभी कभी हो सकते हैं. एनपीवी कहेगा प्रोजेक्ट ए कर लो, आईआरआर कहेगा प्रोजेक्ट बी कर लो. दिस मे बी बिकॉज ऑफ the timing difference of the cash flows, difference in scale of operations, disparity in the life of two projects. So in all these cases there can be disparity between NPV and IRR, but it's always best to choose NPV because it is going to maximize the wealth of the shareholders. It is going to maximize the wealth of the shareholders.
ओके, डू रिमेंबर कि एनपीवी हमेशा चूज करेंगे ओवर आईआरआर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंपनी वुड प्रेफर एम्प्लॉइंग डेट एज कंपेयर्ड टू इक्विटी? बताइए, इन इनमें से कौन सी सिचुएशंस में कंपनी वुड प्रेफर की लोन ले लेते हैं रेदर देन इशूइंग इक्विटी शेयर्स? बिल्कुल निहारिका, एनपीवी बेस्ट ऑप्शन है. हाँ बिल्कुल शालिनी. बनीशा, क्योंकि हमारे कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स को कईयों को इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आती, तो इसलिए आई हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश. I am seeing the answers coming in as option number C from Shalini, D from Abhilasha, Chetan, Guruswami, Chetra, Sane Academy. So they are saying, sir, answer is option D, all. So let's see if the answer is option number D. So debt, when are you going to use debt? When shareholders prefer to maintain their degree of control. अगर shareholders चाहते हैं कि हमें अपना control dilute नहीं करना, if they do not want to dilute their control, then they would not want to issue any more shares. They would rather say, let's issue debt, let's not issue any more shares. So yes, they would prefer debt. When company desires flexible capital structure, so when the company is raising money through debt, the company can at any time in future it can repay that debt. So flexibility is always there. अगर आपने equity issue कर दिया, that is going to remain with the company forever. But debt you can always redeem. So if you want to make your structure flexible, then go with debt. If you want to make it rigid, go with equity. When company wishes to benefit from trading on equity, तो normally क्या होता है, debt के ऊपर जो interest है, the interest on debt is normally less, and that's why we can maximize the return for the equity shareholders. This is what is referred to as trading on equity. So if company wishes to take benefit of it, it would definitely have to issue debt. Debt की वजह से ही trading on equity का benefit मिलता है. So yes, the answer is option number D, all of the above. Okay, फटाफट से let's come to the next question. फटाफट से लीवरेजेस के फॉर्मूला को मैच करके बताइए. Let's tell me the right answer. Let's match all these leverage formulas, operating, financial and combined leverage. हाँ बिल्कुल शंभवी. Interest is also tax deductible expense when you are issuing debt. हाँ बिल्कुल एलन. When R is greater than KD, तब आपका debt best होता है. Primanshi, yes, paper 1, paper 2, commerce and management. We are catering to these subjects. Chetra is saying D, Sahana is saying C. शाली ने तो आंसर वापस ले लिया. गीता डी. अरे डी बी सी, इतने सारे मिक्स रिस्पॉन्सेस क्यों दे रहे हो यार? इतना मुश्किल तो नहीं है फॉर्मूलाज इसका. ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों अराइज होती है? ऑपरेटिंग लीवरेज आपकी क्यों अराइज होती है? ऑपरेटिंग लीवरेज आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जुड़ी हुई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कहां पे देखने को मिल रहे हैं? सीधा सीधा आप देख सकते हैं जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो आपकी जो सेल्स हैं, आप उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, यू गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यू गेट योर ईबीआईटी, and from this EBIT आप इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं and divided by the number of shares and ultimately you get your EPS. So if you are considering, sorry यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी ना. वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करके मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके मेरे पास आएगा EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हाँ ऐसे चलते हैं हम. तो अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे सेल में चेंज होने की वजह से EBIT में कितना चेंज आया, सर क्या दोनों में बराबर चेंज नहीं आएगा? अगर आप सेल को 10% बढ़ा रहे हैं तो EBIT का 10% नहीं बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. Why this is not true? Because your fixed cost is going to remain same. आपका fixed cost सेम ही रहने वाला है, and because of this same fixed cost, your EBIT is going to increase more. This is what is referred to as the operating leverage. तो फॉर्मूला सीधा सीधा है, परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहा हूं, अब फाइनेंशियल लीवरेज में मैं देख रहा हूं अपने इंटरेस्ट कंपोनेंट को. So again, interest cost is going to remain same. It is going to remain fixed. Even if my EBIT increases, my interest is going to remain same. So ultimately, the increase in earning per share is going to be on the much higher side.
सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये है कि आप डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज गोइंग टू बी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे मैचिंग बनेगी 1 से। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, तो आप दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं, आप सेल्स और ईपीएस को डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आंसर बना था ऑप्शन नंबर सी का। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बैंकिंग और फाइनेंस ही तो आज का टॉपिक है। इजाज, ये बैंकिंग और फाइनेंस ही तो आज का टॉपिक है यार, क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे शालिनी ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द रिलेशनशिप। यू हैव टू नो कि ये लीवरेज अराइज क्यों होती है। ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड योर फाइनेंशियल लीवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए इसका आंसर दीजिए मुझे। ये थ्योरी बिलीव करती है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जैसे ही आप अपना अमाउंट ऑफ डेट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका डब्ल्यूएसीसी कम हो जाएगा और आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। शालिनी पार्वती सेइंग ए, चैत्रा इज सेइंग बी। मेजॉरिटी आंसर्स ऑप्शन नंबर ए के आ रहे हैं, विच इज परफेक्टली राइट। सो देखो जी, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग अप्रोचेस हैं। ठीक है जी, एक अप्रोच हमारे पास है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो अगर आप डेट को बढ़ाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटम ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, so since the cost of debt is on the lower side, your weighted average cost of capital is going to decline, and अगर आपका cost decline होगा, the value of the firm is going to increase. But the net operating income approach and MM approach, they have something different to say. ये अप्रोच आपको कहते हैं कि जैसे जैसे आप ज्यादा डेट बढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, सो इट वुड मीन कि आपकी फर्म का रिस्क भी बढ़ रहा है। दिस वुड मीन कि आपकी फर्म का रिस्क भी यहाँ पे बढ़ रहा है, एंड अल्टीमेटली योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गोइंग टू रिमेन सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डेट इक्विटी मिक्स कैसा हो, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज एज पर द एनओआई एंड एमएम अप्रोच। सो यस, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, नेट इनकम अप्रोच। हाँ बिल्कुल, नेट इनकम अप्रोच के अंदर ही मानते हैं। हाँ बिल्कुल, डेविड ड्यूरैंड ने दी थी आपकी एनआई और एनओआई अप्रोच। हाँ बिल्कुल, इनको रेलिवेंट अप्रोच बोलते हैं। बिल्कुल, दे आर रेलिवेंट, और एमएम और एनओआई आपके लिए इररेलेवेंट हो जाती हैं। चलिए, let's come to the next question. Which of the following is not one of the popular ways of computing cost of equity? Cost of equity निकालने का इनमें से कौन सा एक पॉपुलर तरीका नहीं है? डिविडेंड यील्ड अप्रोच, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड अप्रोच, अर्निंग यील्ड अप्रोच, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच। हाँ, ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल, ट्रेड ऑफ के अंदर हम बोलते हैं कि डेट अगर आप इंप्लॉय करेंगे, डेट के कुछ आपके बेनिफिट भी हैं, जैसे उस पे आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट फिक्स्ड रहता है, आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले सकते हैं, बट कुछ कॉस्ट भी हैं। डेट अगर आपने इंप्लॉय किया तो आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं, तो आप कुछ ट्रेड ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। ओके शालिनी, चलिए सभी के आंसर्स आ गए। ऑप्शन नंबर डी, वाई टी एम, यील्ड टू मैच्योरिटी। डिविडेंड यील्ड अप्रोच, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड, डी बाय बी प्लस जी। अर्निंग यील्ड अप्रोच, अर्निंग बाय प्राइस। जो आपका वाईटीएम है, वाईटीएम हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ता है, जब हमें कॉस्ट ऑफ हमारे जो बॉन्ड है वो निकालना पड़ता है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच। चलिए, with this let's come to the next question. Consider the following about working capital policy and identify the correct code. हाँ बिल्कुल एलन, YTM से we calculate cost of debt. Different approaches of working capital policy: conservative approach, aggressive approach and moderate approach. तो अगर कोई कंजर्वेटिव है वो क्या करेगा? अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है। अगर कोई कंजर्वेटिव है तो क्या करेगा? ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स इस्तेमाल करेगा या शॉर्ट टर्म फंड्स इस्तेमाल करेगा? चलिए, लोकेश, पार्वती, इजाज, वीरप्पा, कैरोलिना, गुरुस्वामी सभी कह रहे हैं सर ऑप्शन बी। शालिनी सी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कौन यहाँ पे सही है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
तो अगर कोई कंजर्वेटिव है, ही इज गोइंग टू यूज मोर ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स को इस्तेमाल करेगा। अगर कोई अग्रेसिव है, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड कि शॉर्ट टर्म में पैसा लिया, इफ इट गेट्स ब्लॉक्ड, इफ आई एम नॉट एबल टू रीपे इट, द पर्सन इज नॉट अफ्रेड, इट इज गोइंग ही द पर्सन इज गोइंग टू बी अग्रेसिव and he's going to use more of the short term funds. Okay, so aggressive approach more short term funds, and conservative approach more long term funds. Okay, so 1 is 2 and 2 is 3, and moderate approach is going to involve both the use of the long term funds and short term funds. So correct answer is option number B. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मेजॉरिटी लोगों ने आंसर सही दिए थे, बट देयर वर सम इनकरेक्ट आंसर्स। आई होप अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला गिवन है, वी आर गिवन दिस फॉर्मूला एंड यू हैव टू टेल दैट दिस फॉर्मूला रिलेट्स टू व्हिच मॉडल, टू व्हिच डिविडेंड मॉडल डज दिस फॉर्मूला रिलेट। हाँ रिमांशी, अब 23 का बताइए। P is equal to D plus R by K into E minus D divided by K। वॉल्टर है, गॉर्डन है, एमएम है, या फिर लिंटनर है? I am seeing the answers coming in as option number A from Carolina, Ijaz, Shambhavi, Chaitra, Shalini, Abhilasha, सभी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला आपने दिया हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल ये आपका वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की बात हम कर रहे थे। दिस इज योर वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला। यहाँ पे आपका डिविडेंड आ गया, ये आपकी अर्निंग और डिविडेंड आ गए, आर आपका रेट ऑफ रिटर्न आ गया, कि आपका कॉस्ट आ गया। तो इसके हिसाब से आप निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ द शेयर, आप अपनी वैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला मैंने आपके लिए अलग से भी लिख दिया है, तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी अपॉन के माइनस जी, और यहाँ पे हम जी को लिख देते हैं बी इंटू आर। ओके, ग्रोथ रेट इंटू रिटेंशन रेशो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला ऑफ वॉल्टर मॉडल इज अप्लाइड। तो वॉल्टर और गॉर्डन के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए ये फॉर्मूला। शालिनी, लिंटनर मॉडल बहुत बड़ा है, मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे? अलग से कभी एक्सप्लेन कर देंगे शालिनी। रिमांशी देखो, अगर आपको पूरी क्लासेस चाहिए तो आपको एवरस्टडी क्लासेस की ऐप पे मिल जाएंगे, यू कैन सब्सक्राइब टू अवर कोर्सेज। बट सम क्लासेस ऑफ ऑल द टॉपिक्स आर गोइंग टू बी देयर ऑन एवरस्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल एज वेल। चलिए, आई एम सीइंग द आंसर्स कमिंग इन एज ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम शंभवी, मुट्टू, गुरुस्वामी, पार्वती, चैत्रा एंड श्रीनिवास आर सेइंग ऑप्शन नंबर ए। ए और सी में कंफ्यूजन चल रहा है, ए और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम मॉडल, सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला बता दो फटाफट से, फॉर्मूला हो जाए पहले तो। फॉर्मूला बता दो, एजम्पशंस तो याद करनी आपके जो भी मॉडल्स हैं, जो भी आपकी थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में, यू हैव टू लर्न द एजम्पशंस ऑफ दोस थ्योरीज एंड दोस मॉडल्स। यहाँ पे मार्केट्स को एज्यूम किया जाता है दे आर हाईली एफिशिएंट, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क फ्री रेट पे बोरो कर सकते हैं, आरएफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन दिस फॉर्मूला। बीटा कोफिशिएंट जो है, इट इज द मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, नॉट अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी आपकी गलत हो जाती है। इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, तो इट मींस कि हमारे पास कोई अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा ही नहीं। When the portfolio is diversified, the only risk that is relevant is systematic risk. So that's why the answer is option number C. बिल्कुल अभिलाषा, बिल्कुल सही बताया। इसका फॉर्मूला नहीं बताया किसी ने, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है इसका। हाँ, वाई नॉट डी बता दिए इजाज आपको, डी गलत है, सीधा सीधा गलत है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो इन्वेस्टर होल्ड करते ही हैं, तभी तो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं होता, देयर इज नो अनसिस्टमेटिक रिस्क। हाँ बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल आ गए सबके फॉर्मूलाज भी। चलो जी, विद दिस लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस related to your derivatives topic in finance. Derivatives topic in finance.
ऑप्शन जब आप लेते हैं तो क्या मिलता है आपको? जैसे मैं रिमांशी के साथ क्या करता हूं, मैं उसे कहता हूं कि भाई देखो ऐसा है, मैं आपसे मैं आपसे मारुति का शेयर खरीदूंगा 7,000 रुपए का आज से 3 महीने बाद। ठीक है, मैं ऐसा राइट आपसे एक्वायर कर लेता हूं कि मैं आपसे मारुति का शेयर खरीदूंगा 7,000 का आज से 3 महीने बाद, और इसके लिए मैं उनको एक प्रीमियम पे कर देता हूं। आई पे रिमांशी अ प्रीमियम ऑफ ₹500 and enter into a contract that I am going to buy, I am going to have the right to buy the share of Maruti at ₹7,000 3 months from now. So through this option, I have got the right to buy. I have got this right to buy, but I do not have this obligation to buy. Suppose 3 months down the line, the price of Maruti Suzuki is, let's suppose it is 6,200. Then I am not going to exercise this option. So there is no obligation on me, but I have got this right. I have got this right to buy. देखते हैं किसके आंसर सही आए थे। संजू का आंसर बी था। मेजॉरिटी लोग आंसर बी क्यों दे रहे थे इसका? ओके, आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। हाँ, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। हाँ, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। राइट, राइट मिलता है टू बाय, बट डज नॉट ब्रिंग एनी ऑब्लिगेशन। हाँ, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता हमारा। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर मार्केट में सस्ता मिल रहा है, आई एम गोइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम रिमांशी। ओके, हाँ बिल्कुल अभिलाषा, आप सब बहुत होशियार हैं, हमसे आगे बढ़ चुके हैं, विच इज रियली गुड टू सी। हाँ, चैत्रा, वी आर गोइंग टू डू अ सेपरेट सेशन ऑन ऑल द न्यूमेरिकल्स, डोंट वरी। A separate session on all the numericals is going to be conducted on 10th of March. So don't worry. So guys, this was our discussion for today. Please like this video. Please do like this video and share with your friends. अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं, do subscribe for regular updates. Telegram चैनल पे भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आपको UGC Net Commerce Management के लिए फ्री नोट्स चाहिए, you can download the Everstudy Classes free app from Google Play Store. और यहाँ से आप हमारे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे बारे में और जानकारी के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एंड यू कैन राइट टू अस ऑन hello@everstudy.in, और यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर विच इज अवेलेबल। मोस्ट वेलकम एजाज, कैरोलिना, शंभवी। आई होप आपकी प्रिपरेशन एकदम सही ट्रैक पे चल रही है और प्रिपरेशन इज ऑन राइट ट्रैक फॉर द अपकमिंग कर्नाटका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। Again repeating, I want all of you guys to perform really well in the upcoming examination. Next topic is going to be stats and economics, day after tomorrow. Most welcome Parvati, Guruswami, Tejaswini, Vanishri, Shalini, Virappa, Swati, Lakshmi, Sagar, Chetan, Kavita, Tanmay। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, and I really want you guys to do really well. So please don't let me down. ओके, तो मैं फटाफट से इस सेशन को एंड करता हूं, बट यू गाइस कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। वी विल मीट रियली सून अगेन। टिल देन, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।